Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, wastewater management. Warm up. Look at the pictures of solid, liquid and gaseous waste is given below. Write one source of each of the wastes. Sewage. Sewage is the wastewater which is carried away in sewers. There are four major sources of wastewater. Domestic sewage. This is the wastewater from kitchen sink, wash basin, bathroom, shower, bathtub and fecus, human excreta from the toilet, etc. produced at homes. Commercial sewage. This is the wastewater produced and released by shops, offices, schools, hospitals and big establishments. Industrial waste. This is the wastewater released by industries. देखिए sewage आपका जो domestic है जो आपके घर से आता है, आपके किचन सिंक से हो या आपके वॉश बेसिन से, आपके टॉयलेट से आता हो, बाथरूम से. कमर्शियल सीवेज जो आपके शॉप्स, ऑफिस, स्कूल से आता है. इंडस्ट्रियल जो सीवेज आपका इंडस्ट्रीज से आता है. रेन वाटर. एज रेन वाटर फ्लोज ऑन द ग्राउंड इट मे पिक अप वेरियस कंटामिनेंट्स इंक्लूडिंग सॉइल पार्टिकल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनिमल वेस्ट, ऑयल एंड ट्रीज. अच्छा, रेन वाटर जैसे ग्राउंड में फ्लो करता है तो अपने साथ बहुत सारे कंटामिनेंट्स लेके आता है जिसमें आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. Contaminants present in sewage. Sewage in a liquid waste. Most of it is water which has dissolved and suspended impurities. These impurities are called contaminants. Sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, disease-causing bacteria and other microbes. अच्छा, sewage आपका एक liquid waste है और ज़्यादातर जो इसका है water जिसमें आपके dissolved होती है और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इन इम्प्योरिटीज को कहा जाता है कंटामिनेंट. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सुवेज. वी नाउ नो दैट द सुवेज कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एक्यूमुलेशन ऑफ सुवेज और अनट्रीटेड सुवेज कॉज द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स. Spread of disease. In small villages and slums, there may not be a proper drainage system to dispose of the wastewater. At some places, open drains and pipes carrying dirty water get choked by plastic materials or non-biodegradable materials. As a result, dirty wastewater overflows in the colonies. In both the cases, the wastewater may collect in lanes and backyards and stagnate. It emits foul odor. The stagnant sewage acts as a breeding ground for various flies, mosquitoes and insects. All of these cause infectious disease like diarrhea, cholera, jaundice, dysentery, etc. अच्छा, villages and slums में क्या होता है कि वहाँ पे proper drainage system नहीं होता है वेस्ट वाटर के डिस्पोजल के लिए. कुछ जगहों पे ओपन ड्रेन्स होती हैं और पाइप्स जो डर्टी वाटर को कैरी करते हैं, है ना, और आपके चोक हो जाते हैं प्लास्टिक मटेरियल या किसी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से. तो दोनों केस में क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर आपका कलेक्ट होता है लेन्स या बैकेट, वो स्टेगनेट यानी आपका वो फ्लो नहीं कर पाता, जिसमें से फाउल स्मेल आती है. फिर ये आपके लिए फ्लाइज, मस्कीटो एंड इंसेक्ट का ये ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है और इनकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं. Water pollution. In some places, the local municipal bodies have laid a network of drainage pipes throughout the area. Through this network, the sewage is released into nearby water bodies, that is lakes or rivers. Discharge of untreated sewage into water bodies is one of the main sources of water pollution. Drinking of water contaminated with sewage can cause many diseases in people. अब कुछ जगहों पे जो local municipal bodies होती हैं, उन्होंने एक नेटवर्क उन्होंने लेकर रखा है ड्रेनेज पाइप का थ्रू द एरिया. हालांकि ये जो नेटवर्क है सुवेज का, ये आपके नियर बाय वाटर बॉडीज़ में ही रिलीज़ किया जाता है. और जब ये अनट्रीटेड सुवेज जाता है आपके वाटर बॉडी में तो ऑफकोर्स ये वाटर को पल्यूट ही करता है. यूट्रोफिकेशन. Sewage contains nutrients like phosphates and nitrates. The discharge of such nutrient-rich water into the water bodies causes increasing growth of algae. An excessive growth of algae in a water body rich in nutrients such as phosphate is called eutrophication. Sewage में आपके nutrients होते हैं जैसे phosphates या nitrates हैं, तो जब discharge होता है ऐसे nutrient rich water का water bodies में तो इसकी वजह से algae की growth बढ़ जाती है. फिर जब excessive growth होती है algae की water body में rich in nutrient जैसे कि phosphate, तो that is called eutrophication. The sewerage system. In a house or a public building, generally there are two sets of pipes. The narrow set of pipes bring clean drinking water into the house and the wide set of pipes take away wastewater produced in the house. An underground water pipe which carries away dirty waste water is called a sewer. If somehow we could see through the ground, we would see a network of sewers forming the sewerage. So sewerage is an underground network of interconnected pipes called sewers that transports or carries the sewage from the place where it is produced like home or other buildings to the sewage treatment plant where it is processed. देखिए आपका हाउस या पब्लिक बिल्डिंग है जहाँ पे आपके दो सेट्स ऑफ पाइप्स होते हैं. जो नैरो सेट होता है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को लेके जाता है और जो वाइड सेट होता है पाइप्स का वो वेस्ट वाटर को लेके जाता है. इसके अलावा आपका जो एक अंडरग्राउंड वाटर पाइप होता है जो कि डर्टी वेस्ट वाटर जिसे सीवेज कहा जाता है उसको लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड सीवर.
और अगर आप ग्राउंड के अंदर देख सके तो हमें नेटवर्क दिखेगा सीवर्स का, जो आपका सीवरेज बनाता है। तो सीवरेज एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसमें आपके इंटरकनेक्टेड पाइप्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सीवर, जो कि इनको ट्रांसपोर्ट करता है सीवेज को फ्रॉम द प्लेस जहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है। A manhole is a covered vertical hole in the ground, pavement or road above the underground sewer pipeline. If there is any leakage or blockage in the underground sewer pipeline, the sanitary worker can go down up to the sewer pipeline for cleaning or any repair. Manholes are provided at every 50 meters to 60-meter distance in the main sewer pipeline. Manholes are also provided at the junction of two or more sewers. Manholes are also provided when there is a change in the direction of sewer line. एक manhole आपने देखा होगा, एक आपका covered vertical hole होता है ग्राउंड में, किसी पेवमेंट में या रोड में अंडरग्राउंड सीवर के ऊपर। तो कोई भी लीकेज और ब्लॉकेज हो जाता है अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन में, तो जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो नीचे जाते हैं इन मैन होल के थ्रू। तो मैन होल्स आपकी हर 50 से 60 मीटर के डिस्टेंस पे जो आपका मेन सीवर पाइपलाइन होता है वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर, sewage following through drainage pipe can be treated in specially designed treatment plants. Water treatment plant. Before raw sewage can be safely released back into the environment, it needs to be treated correctly in a water treatment plant. In a water treatment plant, sewage goes through a number of chambers and chemical processes to reduce the amount and toxicity of the waste. देखिए जो raw sewage है, आपका जो रॉ सीवेज है वो सेफली रिलीज किया जाता है एनवायरनमेंट में, जहाँ पे पहले इसको करेक्टली इसको ट्रीट किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज जो है नंबर ऑफ चेंबर्स से होते हुए जाता है, नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेस होते हैं जो कि टॉक्सिसिटी का अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं। Sewage treatment consists of several treatment stages: primary treatment, secondary treatment, and tertiary treatment. Primary treatment. The sewage first goes through a primary phase. This is where some of the suspended solid particles and inorganic material is removed by the use of filters. Secondary treatment. Secondary treatment is designed to degrade the biological content of the sewage that are derived from human waste, food waste, soaps and detergent. It consists of the following step: aeration, secondary sedimentation. देखिए पहले स्टेप में क्या होता है कि जितना भी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसको रिमूव किया जाता है प्राइमरी फेज में फिल्टर्स की यूज से। सेकेंडरी फेज में क्या किया जाता है कि जो बायोलॉजिकल कंटेंट होता है सीवेज का, जो आपके ह्यूमन वेस्ट या फूड वेस्ट से आता है, तो उसको रिमूव किया जाता है। ये आपका एरेशन और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन से होता है। Tertiary treatment. The final stage of treatment is the tertiary phase. The stage must be done before the water can be reused. Almost all solid particles are removed from the water and chemical additives are supplied to get rid of any leftover impurities. अब इस स्टेज में क्या होता है कि जितनी भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, फिर केमिकल एडिटिव्स डाले जाते हैं जिससे भी कि कोई भी लेफ्ट ओवर इम्प्योरिटीज़ है वो आपकी रिमूव हो जाए। Better housekeeping practices. We can minimize the undesirable waste which goes from our house down into the drains by taking the following precautions. Cooking oil and fats should not be thrown down the drain. They can harden and block the pipes. In an open drain, the fats block the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water. We should throw oil and fats in the dustbin. Chemicals like paint, solvents, insecticides, motor oil, and medicines should not be thrown down the drain. It may kill the useful microbes that help decompose the wastes present in the sewage and purify water. Used tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, etc. should not be thrown down the drains. These wastes choke the drain. They do not allow free flow of oxygen to the useful microbes in the drain which decompose the wastes. देखिए आप कुछ प्रिकॉशंस कैसे रख सकते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल या फैट है उसको आप ड्रेन में ना डालें क्योंकि ये हार्ड हो जाते हैं और फिर पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो इसलिए इनको हमेशा डस्टबिन में डालें। पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड इनको भी आप ड्रेन में डालें क्योंकि जो यूजफुल माइक्रोब्स होंगे उनको ये किल कर देंगे। आपके जो यूज टी लीव, सॉलिड फूड रिमेन्स होते हैं, टॉयज, कॉटन, इसको भी आप ड्रेन में नहीं डालें क्योंकि ये ड्रेन को चोक कर सकते हैं। So all the above mentioned solid waste should be thrown in the dustbin. Alternative methods of sewage disposal. We have just learned that poor sanitation is the cause of a large number of diseases. To improve sanitation, low-cost on-site sewage disposal systems are being encouraged where there is no proper sewage system. Examples of low-cost on-site sewage disposal systems are septic tanks, denitrification, ozone wastewater treatment. Septic tank. Septic tanks treat sewage at the place where it is located rather than transporting the waste through a treatment plant or sewage system. Septic tanks are usually used to treat sewage from an individual building. Untreated sewage from a property flows into the septic tank and the solids are separated from the liquid. Solid material is separated depending on their density. Heavier particles settle at the bottom of the tank, whereas lighter particles such as soap scum will form a layer at the top of the tank. Biological processes are used to help degrade the solid materials. The liquid then flows out of the tank into a land drainage system and the remaining solids are filtered out.
अच्छा, अब सेप्टिक टैंक जो है आपके, ये सुवेज को ट्रीट करते हैं जिस प्लेस पे लोकेटेड होते हैं, मतलब ये वेस्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं करते किसी ट्रीटमेंट प्लांट या सुवेज सिस्टम में। तो जो अनट्रीटेड सीवेज होता है किसी भी प्रॉपर्टी को सेप्टिक टैंक में आपका फ्लो करता है, जहाँ पे आपके सॉलिड सेपरेट हो जाते हैं लिक्विड से। सॉलिड मटेरियल को सेपरेट किया जाता है, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर। जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो ऑफकोर्स आपके बॉटम में आपके सेटल हो जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं जैसे सोप्स कम, वो आपका एक लेयर बना लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ किया जाता है टू हेल्प डिग्रेड द सॉलिड मटेरियल्स। फिर जो लिक्विड है ये फ्लो करता है आपका टैंक में इनटू अ लैंड ड्रेनेज सिस्टम एंड रिमेनिंग सॉलिड्स आर फिल्टर्ड आउट. Denitrification. Denitrification is an ecological approach that can be used to prevent the leaching of nitrates in soil. This in turn stops any groundwater from being contaminated with nutrients. Denitrification आपका ecological approach है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जो आपका लीचिंग हो रहा है ना नाइट्रेट का, उसको प्रिवेंट करने के लिए. तो इस इन टर्न आप क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि कोई जो ग्राउंड वाटर है वो स्टॉप हो जाएगा कंटेमिनेट होने से विद न्यूट्रिएंट्स. Fertilizers contain nitrogen and are often applied to crops of farmers to help plant growth and increase the yield. Bacteria in the soil convert the nitrogen in the fertilizer to nitrates, making it easier for the plants to absorb. Immobilization is a process where the nitrates become part of the solid organic matter. When oxygen levels are low, another form of bacteria then turns the nitrates into gases such as nitrogen, nitrous oxide, and nitrogen dioxide. The conversion of these nitrates into gas is called denitrification. This prevents nitrates from leaching into the soil and contaminating groundwater. अब फर्टिलाइज़र में आपके नाइट्रोजन होते हैं जो क्रॉप्स को दिए जाते हैं बाय फार्मर्स, राइट. आपके जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, जो आपका फर्टिलाइज़र में होता है नाइट्रोजन उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, जिससे कि प्लांट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं. इमोबिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट जो है वो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट बन जाता है. जब ऑक्सीजन लेवल आपके लो होते हैं तो जो दूसरा फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है वो नाइट्रेट को टर्न कर देता है नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में. तो जो कन्वर्जन होता है जिसमें नाइट्रेट जो है आपका गैस में आपका कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. Sanitation at public places. A large number of people visit public places like hospitals, cinema halls, markets, railway station, and bus depot. So a large amount of waste is generated at all these places every day. If all the waste is regularly and properly, it can result in the spread of disease. It is the responsibility of the municipality of the area to maintain sanitation at public places. We can contribute in maintaining sanitation at the public places by observing some of the following practices given below. तो ये बहुत सारे हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक प्लेसेस को विजिट करते हैं, लाइक सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट, है ना. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो वेस्ट है वो जनरेट होता है हर दिन. अगर इसको रेगुलरली और प्रॉपरली इसको डिस्पोज नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, डिसीज़ स्प्रेड हो जाएगी. तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, वी शुड नॉट स्कैटर रबिश सच एज फूड वेस्टेज, एम्प्टी प्लास्टिक, वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा इन पब्लिक प्लेसेस. इफ देयर इज नो डस्टबिन अवेलेबल एट अ पब्लिक प्लेस, द रबिश शुड बी कैरीड होम एंड थ्रोन इन द डस्टबिन. वी शुड नेवर यूरिनेट ऑन द रोड साइड. वी शुड कवर द ओपन ड्रेन्स. इफ द sewage of any particular house makes our neighborhood dirty, we should inform the sanitation department of the municipality. Adopting good sanitation practices should be our way of life. देखिए, सबसे पहले तो आपको रबिश को यहाँ वहाँ स्कैटर नहीं करना चाहिए, जैसे कि फूड वेस्ट है, एम्प्टी प्लास्टिक, वाटर बॉल्स, आपकी बॉटल्स हैं, डस्टबिन है तो हमेशा अवेलेबल होते हैं आपके पब्लिक प्लेसेस में, तो वहीं पे ही आप इसको डिस्पोज करें. रोड साइड में कभी भी यूरिनेट ना करें. ओपन ड्रेन्स हैं तो उन्हें कवर कर दें, राइट. Sanitation and diseases. Poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of a large number of diseases. Many places do not have sewerage facilities for the safe disposal of human excreta. Due to this, a very large number of our people defecate in the open fields, near railway tracks, on dry river beds, and sometimes directly in water. Untreated human excreta are a health hazard. It causes soil pollution and water pollution. अच्छा, देखिए, पुअर सैनिटेशन या कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं. अब जैसे गांव में जो लोग रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर सीवरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, ओके. तो लोग क्या करते हैं कि ओपन में डिफिकेट करते हैं फील्ड्स में या रेलवे ट्रैक्स के पास. तो अब ये जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ये आप इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है. बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट्स polluted. Groundwater is a source of water for wells, tube wells, springs, and many rivers. The drinking of water contaminated with human excreta causes a large number of waterborne diseases like cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis, and dysentery. तो इससे देखिए आपका ग्राउंड वाटर और आपका सरफेस वाटर दोनों पोल्यूट होते हैं, है ना. और अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर पियेंगे जिसमें आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा मिक्स होगा तो उससे बहुत सारी वाटरबॉर्न डिसीज होंगी, लाइक दीज. Notes for the chapter. Water is necessary for every form of life. Clean water is a basic requirement of humans. Water mixed with waste matter is known as wastewater.
Cleaning of water is a process of separating pollutants from the wastewater before it is released into a water body or is diffused. Sewage is the wastewater carried away in seawards or drains. Sludge is the end product of sewage treatment. It is a thick, viscous matter that settles at the bottom of the tank. Sludge is decomposed by anaerobic bacteria to form biogas. Chemicals such as chlorine and ozone are used to disinfect water before releasing it into the distribution system. Always throw oil and fats in dustbin. Do not throw them into drains as they harden and block the pipes. Also, deposition of fat or oil in drain reduces water filtration. Poor sanitation and contaminated water are the causes of several waterborne diseases such as cholera, typhoid, meningitis, hepatitis, etc. Children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा and I hope आप proper sanitation maintain करेंगे अपने घरों में and इस chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.